अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नाजुक मोर। मेरा नाम अमरीन शम्सी है और हस्ब मामूल मेरे साथ मेरे को होस्ट उजैर यूनिस है। अब हम आपस की तारीफ तो करते ही हैं, लेकिन तारुफ नहीं करवाते, बिकॉज आई होप दैट यू नो अस एंड होपफुली फॉलो अस एज वेल ऑन आवर सोशल मीडिया। बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते जाहिर है, और हम क्योंकि हमने वादा किया था कि हम दोबारा से रेगुलर ट्रांसमिशन शुरू कर रहे हैं, एंड आई विल से कि उसमें बहुत कसूर उजैर का भी था, मेरा कुछ कम था। मगर इसीलिए उजैर की जिम्मेदारी है कि अभी हमारे जो निगरान वजीर आजम हैं आपकी तरफ आए थे उजैर, काफी कुछ बातें की उनकी, और कुछ जो तवक्कुआत थी और कुछ सवालात थे। इस हवाले से कि एक निगरान वजीर आजम को अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली में वहाँ क्या काम है, क्यों करना चाहिए, वगैरह वगैरह। जाहिर है थिंक टैंक्स और लॉबिंग के लिए भी जरूरी होता है, बट आई थिंक आज जो एक बड़ी खबर, क्योंकि अब ये हमें मालूम हो गया कि वो ऑक्सफोर्ड यूनियन के साथ बातचीत करेंगे, लंदन शायद पहुंच चुके हैं, बट एक इंटरव्यू में काकर साहब ने कहा कि जो फेयर इलेक्शन थे, जाहिर हमारी आइन तो यही कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यही मैंडेट है, लेकिन कहते हैं उनका एक वो एक बड़ा बयान जो है उस पर काफी डिस्कशन हो रही है। उनका ये कहना है कि फेयर इलेक्शंस इमरान खान के बगैर भी हो सकते हैं। इस वक्त आपको मालूम है इमरान खान तो जेल में नजरबंद है, कई केसेस उन पे हैं, तवक्को भी की जा रही है कि शायद 9 मई के वाकयात में भी उनकी कन्विक्शन हो, अगर और किसी में कन्विक्शन हो ना हो। उनका ये भी साथ साथ कहना था हमारे निगरान वजीर आजम का, कि बहुत सारे ऐसे हजारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस नहीं है, और वो सियासी जो अमल है उसका हिस्सा भी होंगे, इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। और अगर इमरान खान ना हो तो फेयर इलेक्शंस तो फिर भी होंगे। फ्री का उन्होंने इस तरह से शायद इतने वाजे तौर पे नहीं जिक्र किया। इसी हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि तारीख के बारे में उन पे काफी तानेबाजी हो रही थी, और मैं समझाने की मेरी कोशिश रही है कि देयर इज अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड। कुछ दबाव की वजह से, कुछ जो भी वजूहात हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। एक तारीख उन्होंने दे दी है जो सदर आरिफ अलवी साहब नवंबर में देना चाह रहे थे। मैं यहाँ रोकती हूँ उजैर, क्योंकि आप अमेरिका में हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है अनवारुल हक काकर साहब, उनका जो दौरा था, और let's kick off with this statement and your take on it, and then we'll talk about his visit and why he needed to do it and what were the results of it. या अंबर, ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है अमरीकी एसोसिएटेड प्रेस को, अमरीकी नहीं एसोसिएटेड प्रेस को, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इसकी हेडलाइन होनी चाहिए कि केयरटेकर पीएम अप्रूव्स -1 और माइनस खान फॉर्मूला, बेसिकली राइट। लुबे लुबाब तो इसका यही है कि जी खान साहब अगर डिस्क्वालीफाइड हैं, जिस तरह मियाँ साहब जेल में थे और डिस्क्वालीफाइड थे 2018 में, तो इलेक्शन जो हैं वो फेयर होंगे। फ्री, आपने गुड कैच, गुड जर्नलिस्टिक कैच कि उन्होंने फ्री का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। महंगाई इतनी है कि फ्री आजकल कुछ नहीं है पाकिस्तान में। तो इस पे तो है, आई थिंक इट्स वी शुड शो कंसिस्टेंसी कि अगर एक व्यू था, एंड आई थिंक वैलिड, एटलीस्ट मेरा व्यू तो था कि 2018 के इंतखाबात जो हैं वो शफाफ नहीं थे और फेयर नहीं थे, क्योंकि एक पूरा प्री पोल रिगिंग का प्रोसेस चलाया गया, जिसमें ऑब्वियसली द प्राइम टारगेट वाज नवाज शरीफ, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अगर वो फेयर नहीं थे, क्योंकि आपने टेक्निकल नॉकआउट करना था मियाँ साहब को, तो अब आपने अगर टेक्निकल नॉकआउट करना है खान साहब का, तो वो भी फेयर नहीं होंगे। वी शुड have that consistency, and I think it is really irresponsible in my view for a caretaker prime minister to comment on something like that. And this has not been just this interview. उन्होंने एक और interview दिया, and we can jump towards that as well, if you'd like, जहाँ उन्होंने चीन और इजराइल और अमेरिका और पाकिस्तान के कुछ रिलेशनशिप या मवाजना किया। हाँ मवाजना किया। तो वो मुझे लगता है, मेरा एक हमेशा से, क्योंकि एंड आई थिंक आई वुड लव योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल, मेरा थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जब आप किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, बड़ी शख्सियत का, या देख रहे होते हैं, तो अगर गेस्ट होस्ट के सामने नोटबुक हो या डॉक्यूमेंट्स पड़े हों सवाल करने के लिए, और गेस्ट के सामने ना हो और टेलीप्रॉम्प्टर भी ना हो, आपको नजर आ रहा हो कि टेलीप्रॉम्प्टर भी सेटअप नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि कभी कभार दे प्रेफर टेलीप्रॉम्प्टर सेटअप्स, दैट्स अ मेजर रेड फ्लैग कि इस इंटरव्यू में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होनी है जिस पे हेडलाइन बनेगी, क्योंकि सामना गेस्ट जो है वो तैयारी करके नहीं आए। तो आपका क्या ख्याल है इस पे? मुझे लगता है तैयारी कम की हुई होती है थोड़ी। देखिए उजैर, मर्दानगी यही होती है कि आप पर्ची ना लेकर जाए।
आप क्या बात कर रहे हैं, पर्चियां लेके जाए, टेलीप्रॉम्प्टर हो, दैट्स फॉर गुसीज। या तो वो जो है वो मैंने तो एटलीस्ट यही सीखा है फ्रॉम माय अर्ली एक्सपीरियंस के टॉकिंग पॉइंट्स जो लिखे जाते हैं उस पे बहुत ज़रूरी होता है स्टिक करना, स्पेशली फॉर अ लीडर इन अ ट्रिकी स्पॉट। तो अनवारुल्लाह काकर साहब जो हैं वो सीएफआर में भी बड़े बगैर नोट्स के बात कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो चीन का इसराइल है, जिस तरह इसराइल जो है वो अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो भी मुझे सवाल आया कि इसराइल तो ऑक्यूपाई भी करता है टेरिटोरी, इंटरनेशनल कवानीन भी नहीं मानता, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी करता है फलस्तीनियों पे, तो अगर ये पैरेलल ठीक है तो फिर पाकिस्तान भी ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है। हमारे फलस्तीनी कौन है, सवाल फिर ये हाँ बनता है। हाँ, ये सवाल बनता है। तो वो अजीब सी मुझे उनकी ट्रिप लगी। पहली बात तो ये, आई थिंक एज अ केयरटेकर पीएम ही शुडंट हैव कम। काफी सारे लीडर्स थे इस साल जो नहीं आए। और जो एजेंडा था उस पे भी उनका अगर हम देखें, उनकी मीटिंग्स हुई तो वो ईरानी लीडर से मिले हैं, एज द हाईएस्ट लेवल मीटिंग ही हैड। तो कैलेंडर भी एम्प्टी था एक तरह से, कोई बिल गेट से मिले लेकिन जो स्टेट लीडर्स थे उनमें सिर्फ जो है द इरानियंस वर देयर दैट ही मेट विद, एंड देन ही डिड सम थिंक टैंक और मीडिया टाइप इंटरव्यूज। खाने पे भी गए, वो वीडियो भी वायरल हुई। बट आई थिंक केयर टेकर पीएम का काम है इलेक्शंस करवाना, तो उनका यूएन आना, वो केयरटेकर एफएम को भेज देते, वो काफी होता। आई डोंट थिंक ही शुड हैव कम फॉर दिस। Yes, but who wants to pass up a junket to New York? जी, और वो अपनी बेगम और बच्चों के साथ या बच्चे बेटे के साथ भी आया अपेरेंटली, अकॉर्डिंग टू अ सतूर एंड अदर जर्नलिस्ट, और अब वो लंदन जा रहे हैं। तो एक मुल्क जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, उस पे केयरटेकर पीएम को जंकेट पे जाना, मुझे तो एटलीस्ट बात समझ नहीं आई। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त पे जब खास तौर पे उनका एक मुस्तकिल ओहदा नहीं है, पाकिस्तान का मौकफ कितना बदलेगा, कितना फर्क होगा, ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पॉलिसी चेंज, नॉर शुड ही, so there is no actually no business for him to be there. However, हर किसी को मौका नहीं मिलता कि वो वजीर आजम बने, and I guess he's living it up fully. लेकिन I think absolutely right कि इस वक्त जब वो ये बात करते हैं, and whatever you can constantly say कि it's out of context as well, कि अगर पाकिस्तानी बाहर जा भी रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है। इंडिया में भी तो ऐसे हुआ था, वो रेमिटेंसेस वापस आती हैं, दैट्स ऑल कॉन्टेक्स्ट, बट आई डू थिंक कि द मैसेज रियली वाज बिकॉज people are not leaving, because not just leaving because they're looking, this is your standard immigration, they're leaving or want to leave, because let's make that distinction clear. It's because life is incredibly difficult here. There's very little hope in terms of religious, financial, and political freedoms is dimming. एंड आई थिंक इवन अगर नंबर्स इस बात की तस्दीक नहीं करते कि ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि देयर इज अ वंडरफुल पीस दैट आयशा रजाक आई बिलीव रोट, डिगिंग अप फिगर्स फ्रॉम जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी का डिपार्टमेंट है, व्हिच says that essentially it's the same numbers. We'll probably see an exodus or people desiring an exodus a couple of years from now, ab jo apply kar rahe hain. But the point is that there's a lot of tone deaf statements that have come from the caretaker prime minister, and this particular trip I think is also tone deaf. And Austerity, please, एक optics की बात होती है, austerity, why not practice it? yeah, no, I agree, and I think two key points I want to sort of underline what you just said. पहले तो ये कि अगर ओवरसीज का डेटा आपको कुछ दिखा रहा है तो फेयर, दैट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट। बट एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि इलीगल इमिग्रेशन बहुत हो रही है, और ये हमने देखा ग्रीस में जो ट्रेजिडी हुई उस पे काफी ज्यादा जो तादाद थी वो पाकिस्तानी लोगों की थी जो इलीगली जाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले Pakistan's female Olympian was also trying to leave the country, had left the country illegally, and there was a story on that as well. तो वो डेटा जो है illegal का तो obviously There's capture also a lag. accurately नहीं होता। Uzair, I think you will also see a lag, right? क्योंकि ये अगर Correct. मुश्किल हालात पिछले से ज्यादा आपको इनका सामना करना पड़ा, तो एक दो साल बाद आपको आदाद शुमार मिलेंगे जिससे आपको ये जो लोगों की ख्वाहिश है, एक परसेप्शन है, and to a lot of degree I believe that perception is true. Whenever you talk to young students or people, they want to find a way out. We'll see that reflected in the numbers as well, a couple of years down the line.
एंड आई थिंक द अदर पॉइंट इज कि ये जो रेगुलर इंटरव्यूज देना या मीडिया टॉक करना, आई बी लेस डिप्लोमेटिक ऑन दिस, ऐसा लगता है फुट एंड माउथ डिजीज है पूरी काफी सारे लोगों को काबीना में। ये सिर्फ वजीर आजम साहब की बात नहीं है। गौहर एजाज साहब, उस दिन उनकी एक क्लिप आई कि वो कह रहे थे कि जी सूद हराम है और सूद जो है वो अल्लाह और उसके नबी से जंग करने के मुतरादिफ है, तो हमें सूद, हिज लॉजिक वाज के इंटरेस्ट रेट कम करनी चाहिए और कम होगी और वगैरह वगैरह। तो वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनका काम नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कमेंट्स देना, लेकिन वो फुट एंड माउथ डिजीज है। इसी तरह जो केयरटेकर पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपेरेंटली एक दो दिन पहले कहा, जो मीडिया में चली, उसकी सुर्खी भी चली, कि जी महंगाई होने की वजह से बिजली के बिल जो हैं वो ऊपर जाते हैं, बिजली के बिल ऊपर जाने की वजह से महंगाई नहीं होती। तो वो चिकन एंड एग, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दफा जो कहा था कि बारिश होती है तो पानी आता है, तो वही वाली लॉजिक चल रही थी। तो कभी कभार मुझे लगता है कि आपका काम केयर टेकिंग है, तो केयर टेकर अच्छा वही होता है घर में भी, जब आप किसी को बुलाते हैं केयर टेकिंग के लिए, जो चिक जबान चिक यानी कि ज्यादा आपका ना करे। यानी कि ज़हरा आपका कहना है कि जबान का भी जरा टेक केयर करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसे थोड़ा ताला लगा दें, शॉर्टेज उसकी क्रिएट कर दें, तो बेहतर होगा, स्पेशली जब आप इस तरह के बयानात दें जिसके ऊपर लोग सवाल ही उठाएंगे आपकी इंटेलेक्ट के ऊपर या आपकी सोचने के तरीके के ऊपर। तो आई थिंक अगेन इट्स स्ट्रैट कॉम्स फर्स्ट जो अप्रोच होती है वो नहीं चलती इन इन ऐसी And we saw सिचुएशन में। exactly. So we saw that obviously with Imran Khan as well. जहाँ बार बार यही हमें बताया जा रहा था, and I suspect कि in this case it's the same as well कि foreign office notes बनाता था, briefing देना चाहता था, you know. So that they are any representative from Pakistan, any especially at that high level, stays on message. लेकिन नहीं सुना जाता था, नहीं माना जाता था, because obviously we know better. हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम या हम बहुत पढ़े लिखे हैं और किताबें बहुत पढ़ी हुई हैं, या हम मगरिब को सबसे ज्यादा जानते हैं. So I think that's I think that's the end of that. So minus Imran, as you pointed out, अनवारुल हक काकर साहब ने तो उसकी तौसीक कर दी है, एंडोर्स कर दिया है. It's going to be at least a fair election, according to the caretaker prime minister. But I'm going to move on. Imran Khan obviously has no shortage of support, and recently हमने देखा है कि international press से भी काफी उनको support मिली है, not just international parliamentarians, Congress वगैरह वगैरह. The Intercept, it's not as new as I would have liked, but I think it's worth talking about from your perspective, Uzair, क्योंकि आप भी इन चीजों को monitor करते हैं in terms of Pakistan's budget as well as पैसे आ जा कहाँ से रहे हैं. And I think from me, it's actually from a media perspective. The Intercept, आप सबको पता है कि is a very left-leaning media outlet. जो Glenn Greenwald ने जब Snowden का मामलात हुए थे, started this in I think 2014, 2015, very shortly after the Snowden papers and the release, has been considered again left of left, supported people like Bernie Sanders and Ocasio-Cortez, has been very anti-military and military establishment as well. So obviously you can see the affinity with this current avatar of Imran Khan as well. But the story I think that particularly rankled us a little, quite a lot, was ये यूक्रेन डील को जिस तरीके से IMF डील के साथ आर्म्स तो जो यूक्रेन आर्म्स सेल्स हैं, to link them with the IMF deal, which is what the headline was. And I had a lot of problems with this on many fronts. And usually it's very well written. And there's a lot of detail. And you were quoted on this as well as there. So first of all, I want मैं अपना थोड़ा सा sort of going to sort of go back on how you should assess a story. जो headline में लिखा होता है, how well is it evidenced or proven within the story itself? So the headline really is कि IMF की deal इस वजह से हुई थी क्योंकि पाकिस्तान ने यूक्रेन को आर्म्स बेचे थे, और ये जो टाइमलाइन उन्होंने दी है, it starts in the summer of last year and goes up to this year as well. दो जराए बताए गए हैं उसमें. If I may ये नहीं interrupt on the Yes. headline really quickly, just for the audience के जो है वो हम सही तरह रिफ्लेक्ट कर दें. हेडलाइन है US helped Pakistan get IMF bailout with secret arms deal for Ukraine, comma, leaked documents reveal. That's the headline. अब आ So जाएं आप. first of all, where are the leaked documents in the story? There are no leaked documents in the
story. So that is misleading at best, clickbait at worst. So number one, those जराए का जिक्र किया गया in your lead, which is your first paragraph as well. ये नहीं बताया गया उन जराए का ताल्लुक कहाँ से है. Anonymous sources होते हैं. Two sources are used a lot in a lot of stories, but at least you place them. So are they, where are those sources? That's number two. Number three, I think, is, there's a lot of detail on a meeting between बेचारे जो डोनाल्ड लू हैं, वापसी एंट्री मारी है उन्होंने, वापस एंट्री उन्हें मारी, and Ambassador Masood Khan as well. Great detail. Also builds up a case, obviously, using expert quotes such as yourself and Arif Rafiq. On the face of it, it looks like a good story, but because aapki misleading headline hogi ya clickbaity headline hogi without the leaked documents to prove it, it doesn't have context, which is really important. So historically, Pakistan or Ukraine ke darmiyan kis qisam ki exports, imports, arms ki hui ya nahi hui? Was there an escalation? How is this more or less? And then if you look at the timeline of the IMF bailout as well, in the end, year 2023 mein, very recently, just a few months ago, it was finalized. And apparently these talks were going on since last year. Did Pakistan, at least so many questions, did Pakistan sell more or less arms to Ukraine? Were those substantial in comparison with other countries that were selling or exporting arms for the Ukraine-Russia war? So it leaves out many bits and pieces that are important in terms of understanding the concept, and it makes a very incidental connection between these two. क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी ये एक तासुर है, और दुरुस्त हो गलत हो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती, but that the IMF is essentially primarily is a political, is the economic arm of the United States for its foreign policy needs. So the other thing that we also have to keep in mind when we're assessing any critical reading of any media piece is obviously what this newspaper, organization, platform stands for, where their funding comes from. As I said, it's a very left-leaning platform. It's made a lot of mistakes in the past as well. It's done some fantastic stories that possibly the mainstream media doesn't cover. Uski funding source have been typically been democratic investors, if you will. And among the was a big funder to them and stopped funding them a few months exactly ago. Because there were questions about, given the Intercept has been very critical of moderate Democrats, how much the Intercept splits the Democratic vote has been obviously questioned, as well as who it supports. So it is openly political. It's an activist media platform. So we have to see it from that lens and what they report. And I believe just sort of going over money that it's gone into as well. आपके जो एक बहुत favorite क्या कहते हैं, we also talked about him and the story on the podcast as well. Sam Bankman-Fried was also got some funds from him as well. I'm not saying that the Intercept is corrupt, but I'm just saying that you have to look at all of these factors when you're critically analyzing any piece. That being said, last thing on this, just in terms of the media, this is a story, at least in terms of Pakistan's arms deals to the Ukraine, is a story that local media should have done because it should be of interest to us. So I'm going to end it there. Yeah, no, I think you covered it well, Amber. I'll add sort of my issues with this piece itself, given that I had like a 20-minute conversation with Ryan Grimm on this story when he was on this story, right? So he was covering this story. I think we spoke like a couple of weeks or 3 weeks ago, something like that, when he was doing it. We had a long phone chat. And us phone chat pe, and you're a journalist, you know this, I speak frequently with journalists who need quotes for stories. There are two elements to the way in which, and again, I want to inform the audience that this process chalta kaise, so that they know the context. Usually होता ही है कि या तो एक जर्नलिस्ट आपको सवाल भेजता है फोन पे या टेक्स्ट मैसेज पे कि जी मेरा ये सवाल है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अनाउंस हुआ है, इस पे आपका क्या व्यू है, and I would, you would type in something and give it, and then typically when they review it,
they may make some edits because there's a typo or a comma misplaced, etc. So the journalist will typically come back to you right before the story is published and say कि ये आपका quote मैंने थोड़ा सा edit किया है, अगर आपके ये acceptable है तो please give a yes or make more edits and we'll run with it. तो पहले तो होती है courtesy कॉल के बाद या मैसेज एक्सचेंज के बाद कि आप रन करते हैं कोट्स. रायन से जब मेरी बात हुई एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर दिस हैज हैपेंड टू मी कि मैंने उनको फॉरन मैसेज भी किया कि आप जो मेरे कोट्स रन करें बिकॉज वी हैड अ लॉन्ग 20-minute chat, please run it by me because I'm giving you a lot of background, I'm giving you my analysis, I'm also telling you what I've heard, so I would like to be informed of how you're quoting me. He did not do that before the story, which was surprising to me. No journalist I've interacted. Uzair, do they usually do that? Absolutely. This was the first time ever that, especially after a request has been made to run the court, to not honor that. The second piece of this, Amber, was कि इस पूरी story में, when I read it, I realized why I was not quoted except that one place. Because a lot of the context I was giving Ryan was cutting against the angle with which he was approaching the story. And what's the context I was trying to give him? तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ. कोट, securing the loan eased economic pressure, enabling the military government to delay the elections, a potential reckoning in the long aftermath of Khan's removal. That's the line that they've run with. Now, I had argued in the conversation with the journalist that the military delayed elections not because it secured the bailout, but because there was a technicality over the constitutional clause over delimitations. That's the reason why the elections were delayed. There's context here that you need to be aware of. तो आपने अपने रीडर को बताया ही नहीं कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि जो डिले हुआ इलेक्शन में उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटी थी जो क्रिटिक होना बनती है. हमने भी इस शो पे क्रिटिक किया है उसको, लेकिन आईएमएफ का उससे कोई ताल्लुक एज सच डायरेक्टली नहीं था, लेकिन आप अपने आर्टिकल में ये ड्रॉ कर रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, मैंने उनसे कहा था कि स्टेट बैंक का पब्लिक डेटा है कि पाकिस्तान कितने वेपन्स एक्सपोर्ट करता है हर महीने. आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं वो डेटा. उस डेटा के मुताबिक जुलाई 2003 से लेके अगस्त 2023 तक पाकिस्तान ने तकरीबन $900 मिलियन के वेपन्स, आर्म्स एंड एमो एक्सपोर्ट किए हैं. और प्राइमरी एक्सपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, पीओएफ जिसे कहा जाता है. और वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम कोई 2-3 दर्जन ममालिक को जो है हथियार, एमो इन पर्टिकुलर भेजते हैं. तो आपने वो डेटा कोट नहीं किया. आपने कहा कि जी 900 मिलियन अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल गैप था जो डॉन लू ने एम्बेसडर साहब को कहा, पाकिस्तानी एम्बेसडर को, कि Lou acknowledged the Pakistanis believe the arms contributions to be worth $900 million. That's what they're running with. The State Bank data shows us that since the war in Ukraine began, February 2022 से लेके अगस्त 2023 तक टोटल जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं, यूक्रेन के नहीं है, टोटल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से जो हुए हैं वो $460 मिलियन हैं. तकरीबन 25 से 30 मिलियन महीने का बनता है एवरेज एक्सपोर्ट पाकिस्तान से वेपन्स का. अब ये इंक्रीज तो है ऑन द मंथली एवरेज. 2003 से लेके अगस्त 23 तक तकरीबन 900 हुए, उसमें से तकरीबन आधे जो हैं यूक्रेन की जंग शुरू करने के बाद जो है वो एक्सपोर्ट होने लगे. लेकिन हमें पब्लिक डेटा से नहीं मालूम कि ये जा कैसे और किधर रहे हैं. द आर्ग्यूमेंट इज ओपन सोर्स में ये हुआ है डिस्क्लोज. इकोनॉमिक टाइम्स में इसमें रिपोर्टिंग की है, इंडियन मीडिया ने इन पर्टिकुलर इस पे सबसे अच्छी मेरे नजदीक रिपोर्टिंग की है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है. तो वी नो दैट. लेकिन उसकी जो उन्होंने असर्शन ड्रॉ की है कि देयर वाज अ रिमेनिंग गैप इन द फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड बाय द आईएमएफ pegged at roughly $2 billion, out of which 900 was coming out of this. The data doesn't add up, and they haven't showed, as you said, the documents that prove this. They're making an assertion. And I think that's my fundamental challenge in that, is that first of all, you're making assertions. Second of all, you did speak to somebody, that is me in this instance, who was giving you additional context, and you decided not to run that additional context for whatever reason. Now, you may argue, अच्छा भाई पीस में इतनी जगह नहीं थी. Well, you are a digital publication. आपके 2 या 3 कॉलम प्रिंट का मसला नहीं होता. आप लंबा कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन आपने चूज नहीं किया उसको, क्योंकि अगेन एज यू सेड, इंटरसेप्ट का एक जो आर्ग्यूमेंट रहा है सिंस इट्स फाउंडिंग्स हैज बीन अ क्रिटिक ऑफ द यूएस एम्पायर. वो स्टोरी उस एंगल से ज्यादातर लिखते हैं, और ये स्टोरी भी उस एंगल से लिखी गई है.
लेकिन अगर आप किसी भी पाकिस्तानी एनालिस्ट जो कि क्लोजली फॉलो कर रहा था, वो ये डिनाई नहीं करेंगे कि पाकिस्तान वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रॉबेबली यूक्रेन को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका से मदद आती रही है, सऊदी अरब, चीन और यूएई से भी आती रही है आईएमएफ के ऊपर। इनफैक्ट फरवरी 2022 में डॉन लू ने ही जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जब खान साहब की हुकूमत थी, आईएमएफ प्रोग्राम को वापस ऑन ट्रैक लाने के लिए। वो भी इस राइट, सो आर्टिकल में मेंशन सेम नहीं है। डोनाल्ड लू, राइट, सेम डोनाल्ड लू जिसने कहा था कि खान मस्ट गो। एग्जैक्टली तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट जो है, जब आप एक स्टोरी में नहीं देते अपने रीडर को और एक एंगल से अप्रोच करते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट रियली बॉदर्ड मी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी, कि आपने अपने ऑडियंस को वो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। Simply, I guess the it's the same thing because it doesn't fit into the narrative, and that's why you have to be conscious. I mean, there are always some details in even a poorly written story that may be true, but if you're going to be missing out so much context, and actually, I think the biggest crime is the headline. Then it throws everything else into question, and that's my problem with it. But we'll sort of end that here. उजैर, हमने कुछ और नाजुक मोड़, जो तारीखी नाजुक मोड़ है, उन पे बात करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले शुरू करें, because I we discussed this and I think the most interesting to me was when you mentioned that for you जो बसंत पर पाबंदी आयद हुई थी, वो आपके लिए एक नाजुक मोड़ था। Why? जी अंबर, आई थिंक अगेन आई ट्राइड टू थिंक, जैसे हम इस पे इस लिस्ट के थ्रू जा रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कल्चरल पॉइंट्स जहां हम देख सकते हैं। जैसे हमने बात किया जुनून के ऊपर जो बैन लगाया गया था नवाज शरीफ के दौर में, इसी तरह बसंत जो है वो एक तरह से नाजुक मोड़ इसलिए था। मैं पंजाब, आई डिडंट ग्रो अप इन पंजाब एंड यू डिड, सो यू कैन ऐड द कॉन्टेक्स्ट अबाउट बसंत स्पेसिफिकली, बट कराची में रमजान में जो है पतंगबाजी होती थी और वो एक कल्चर का हिस्सा था। लोग सेलिब्रेट करते थे। सीव्यू पे भी कभी कभार बसंत हो जाता था फेस्टिवल। एंड आई थिंक दीज फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ एड कल्चरल सोसाइटल डेप्थ टू एनी कंट्री। जैसे अमेरिका में अभी है फॉल फेस्ट हो रहे हैं हर जगह, जर्मनी के अंदर अक्टूबर फेस्ट होते हैं। तो ये हर कल्चर का एक अपना एक यूनिक जो है Yeah. लिंक टू द फ्लो ऑफ द साइकिल ऑफ द वेदर एसेंशली। कुछ होते हैं कल्चरल नुआंसेस, लेकिन जब आप वो आउटलेट्स बंद करने लग जाएं एज पार्ट ऑफ रिविजनिस्ट कल्चरल आइडियोलॉजी, एज आई वुड डिस्क्राइब इट इन द पाकिस्तानी केस, कि ये गैर इस्लामी काम है, हमें नहीं करने चाहिए क्योंकि फलाने हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, तो आप क्लोज कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को एक तरह से। एंड आई थिंक उस क्लोजिंग का जो नतीजा आता है इन टर्म्स ऑफ इनटॉलरेंस, इन टर्म्स ऑफ इनएबिलिटी टू अप्रिशिएट योर ओन कल्चरल डाइवर्सिटी एटसेट्रा, दैट टू मी इज व्हाई दिस वाज अ नाजुक मोड़, कि आपने जो है वॉलंटरली कुछ चीजें अपने कल्चर की रिवाइज करना शुरू कर दी और उसके ऊपर इंसर्ट करना शुरू कर दी जो फॉरेन एलिमेंट्स थे, आपके कल्चर में थे ही नहीं। तो उसका जो डैमेज है वो बड़ा दूर तक हमें नजर आता है, और बसंत स्टैंड्स टू मी एज अ की नाजुक मोड़ इन दैट सेंस। No, I love that actually, and I think because I grew up in the Punjab and Lahore, jisko was the hub of Basant, and I saw I was in Lahore in the 90s and left in the early 2000s, but that progression कि Basant एक जाहिर है was a small scale अंदरून लाहौर में होता था, लेकिन हर it was word of mouth. Everybody knew कि जैसे spring आएगी there will be a date announced and वो बसंत होगी, and then there was gradually, obviously, if you were rich and A-list, you'd go to fancy parties on Yusuf Salli's, including Imran Khan, by the way. Basant parties were a big deal, especially with people जो अंदरून लाहौर में और उनके पुराने roots होते थे in Lahore and families. So that was a big deal, but it was such a democratic, festival. क्योंकि आप उन पार्टीज पे ना भी जाएं, लेकिन आपके पास एक छत है और कुछ पैसे हैं तो आप पतंगे खरीद सकते हैं। एवरीबडी वुड ड्रेस अप, पीले कपड़े पहनते थे, कलरफुल स्कार्फ होते थे, मौसीकी होती थी, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ स्पेशल सॉन्ग्स जो माय पॉप सिंगर्स ने बनाए भी थे बिकॉज इट बिकेम पॉपुलर। जब मुशर्रफ आया था, बिकॉज एनलाइटन मॉडरेशन, he wasn't a Maulvi, he made it obviously more commercial. It became bigger and bigger, and it became a calendar event actually for tourism. But yes, despite the fact that Yusuf Salli has tried consistently to have the ban lifted,
सिर्फ राइट विंग की वजह से नहीं था, क्योंकि जाहिर है उसमें गाना बजाना, इट्स गॉट अ इम्पोर्टेंट एक ताल्लुक जाहिर है ईस्ट पंजाब के साथ भी है, क्योंकि दिस इज अ फेस्टिवल इट्स फॉर ऑल ऑफ पंजाब, नॉट जस्ट लाहौर और वेस्ट पंजाब। वो तो एक तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ उसको मेकिंग इट अबाउट the string and how they're being used, how they endanger people's lives, बहुत सारी उसकी रिपोर्टिंग भी बहुत ज्यादा होती थी कि 4 लड़के हैं वो मारे गए थे क्योंकि वो शीशा लगाते थे पतंग पर, कोई इलेक्ट्रोक्यूट हो गया है। So instead of ensuring कि people can safely enjoy these kinds of entertainment, उसको पाबंदी उस पे आयद होगी, and it never revived again, which I think is an absolute tragedy because it was glorious. I आई mean, it थिंक was a proper cultural festival. मुझे लगता था जैसे, अगर इसीलिए शायद स्प्रिंग में ही आती थी, इसलिए कि मौसम खुलता था, but it looked like the sky itself was a garden. इतने वो रंग बिरंगी पतंगे थी, बोकाटा कहा जाता था, and yes, I fully participated in it, you know, every year. आई थिंक उसका एक और जो है, आई हैव ग्रेट मेमोरीज रमज़ान के अंदर, राइट। और मुझे याद है कि आपकी फिंगर टिप्स कट जाती थी उस धागे की वजह से। तो आप 2 धागे बनाते थे, 2 को कंबाइन करते थे, मुझे अभी तक याद है। जो ऊपर वाली साइड पे शुरू में जब आप उड़ाते थे तो वो तेज धागा होता था, और नीचे साइड पे जो है वो कॉटन का धागा होता था, क्योंकि आपने और पेचा टेप लड़ाना है। लगाते जी हाँ, तो आपने पेचा लड़ाना है तो आपने वो वाला धागा इस्तेमाल करना है, तो यू काइंड हैड टू नो, उसकी टेक्निक होती थी। थे। एंड इट गॉट आउट ऑफ हैंड, आई रिमेंबर दैट एज वेल। 2005 में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैन ही कर दिया मैन्युफैक्चर, ट्रेड एंड फ्लाइंग ऑफ काइट्स। और क्यों? उनकी उनकी आर्ग्यूमेंट थी ताकि लोगों की जिंदगी ना जाए काइट स्ट्रिंग्स की वजह से, लेस्ड विद केमिकल्स, ये जो आप बात कर रही थी। अब ये भी बड़ी अजीब सी हमारी जो है एक तरह से पॉलिटिक्स या इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग होती है। कुछ चीज के अंदर नेगेटिव हो तो उसको बैन कर दें। तो भाई, तंबाकू नोशी से भी लोग मरते हैं, आप उसको भी बैन कर दें। पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं, हवाई फायरिंग से भी लोग हलाक होते हैं, तो आप बंदूकें ये ले लें अभी लोगों से। हर हर साल होता है, हमारे अभी हमें भी मालूम है। कराची कराची में कोई भी इवेंट हो, चांद रात हो, न्यू ईयर्स हो, एनीथिंग, या चार एंड पांच लोग बैंड्स वहां मरते बैंड्स डोंट वर्क। तो आपने करना था भाई, पूरी इंडस्ट्री है, लोगों का रोजी रोटी उससे रिलेटेड है, काइट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ अब। एंड अगर आपने उसको करना है तो आप रिफॉर्म्स करें, इस फेस्टिवल के टाइम जो है मैन्युफैक्चरर से इंगेज करें, उनकी एसोसिएशन से इंगेज करें, केमिकल्स एलिमिनेट करें, स्टैंडर्ड सेट करें कि स्टैंडर्ड की बनेगी। क्योंकि मुझे खुद याद है कि मेरा बड़ा भाई जब मुझे लेके जाता था, तो वन ऑफ द लर्निंग्स वाज कि आपने सही तरह का धागा लेना है, क्योंकि कुछ अच्छे नहीं होते थे, केमिकल्स होते थे या बहुत तेज होते थे, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो रादर देन एंगेजिंग विद सोसाइटी, आपने बैन ही कर दिया। और ये अगेन रिलेटेड है, जो आपको चीज पसंद नहीं आए उसको बैन कर दें। तो दैट वाज माय फर्स्ट वन फॉर दिस वीक। I think the two other ones I'll quickly go through before handing it over to you. The second one was 2018 में खान साहब की हुकूमत आती है, और वो अपना इकोनॉमिक काउंसिल एडवाइजर्स का अनाउंस करते हैं। उसमें डॉक्टर आतिफ मियाँ होते हैं। डॉक्टर आतिफ मियाँ जो हैं प्रिंसटन इकोनॉमिस्ट हैं, वी टॉक्ड अबाउट हिम लास्ट वीक एज वेल। रियली ग्रेट डिसीजन टू हैव हिम ऑन। बट फिर बैक ट्रैक होता है, क्योंकि राइट विंग से, रेडिकल राइट विंग, सुन्नी राइट विंग से बैकलैश आता है कि हाउ डेयर यू have an Ahmadi making economic recommendations for Pakistan, and very quickly the Khan government backtracks. आई थिंक ये नाजुक मोड़ सिर्फ मईशत के लिए नहीं था, क्योंकि आपने एक दुनिया के नुमाया एक्सपर्ट को जो है उनकी फेथ की वजह से अपने काउंसिल से निकाल दिया, बल्कि वो एक इंडिकेटर था कि आप कितनी जल्दी, कितनी आसानी से रेडिकल राइट विंग की बात जो है वो सुनेंगे। तो उससे मईशत का भी नुकसान हुआ, आपकी सोसाइटी का भी और नुकसान हुआ, क्योंकि रेडिकल्स एम्पावर हो गए। दैट वाज द सेकंड वन। एंड वन गोइंग बैक इन हिस्ट्री was the doctrine of necessity. जस्टिस मुनीर ने जो 50s के अंदर आर्ग्यूमेंट पेश की कि आइन से हट के कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और उसमें ज़रूरियात, नजरिया ज़रूरियात के मुताबिक जो है हम कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा नाजुक मोड़ था। एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड पीपल एज वेल इस वक्त, क्योंकि जस्टिस ईसा इज नाउ इन द सुप्रीम कोर्ट, and the constitutionality of delaying elections, I think, I hope, is something he listens on, and has hearings on. And I hope the Supreme Court fixes finally the wrongs of the 1950s by saying कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी होती है, उसकी ज़रूरियात के ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो those were the three I had.
really solid, strong ones, Uzair. मुझे नहीं पता if I can follow up, but just on Atif Mia's appointment, I do remember a conversation that I had with Fawad Chaudhry at that time. Jo Zahir hai, is of a liberal bent in cultural terms, at least. And his what he said was, कि देखिए, we couldn't pick a fight. We couldn't take on the street, जहाँ बहुत सारे, as you said, तहरीक लबैक पाकिस्तान और दीगर right wing activists थे, वो मौजूद थे, and we couldn't pick a fight with military either. So we had to backtrack on that one. And फिर नुकसान तो हमने देख लिया. I want to sort of counter your आपने जो kite flying का था, and it kind of reminded me, I was thinking about it, कि I think जो मैं नाजुक मोड़ उस संजीदगी के हवाले से तो नहीं कहूंगी कि हमने देखा कि इंडियन फिल्म्स पाकिस्तानी सिनेमास में दिखाई जाती थी. जब 1965 की वॉर थी तो ज़िया हक के दौर में पाबंदी आयद हो गई. And then very suddenly, because again, Musharraf, if you remember, just a little sort of context as well, इस वक्त secret talks हो रही थी about settling Kashmir and normalizing relations with India as well. And उसी दौर में क्योंकि cinemas and technology had been changing, Pakistani films obviously deterioration हो रही थी, तो lobby भी बनी थी. Indian films were opened for public viewing in cinemas in 2008, I believe. So that was good. लेकिन फिर जब हमने देखा 2016 में और फिर ये reinforce हो गया था in 2019 के जो स्टार प्लस एंड इंडियन चैनल्स आपको केबल पे मिलते थे वो नहीं मिलने लगे, और 2016 में दोबारा से इंडियन फिल्म्स पे पाबंदी आयद हो गई. एंड रियली आई थिंक व्हाट इट टेल्स यू इज, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया ने नहीं किया, उन्होंने भी टिट फॉर टैट एक तरह से किया. वहाँ पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स थे who had gone for shootings, they were in films that were a combination of the two. उनको मुल्क बदर कर दिया था, उसमें मायरा खान आई बिलीव एंड फवाद खान. So I think that's उसका नुकसान ये होता है कि ज़ाहिर एक कंपटीशन भी होती है, people watch these, पाबंदी का कोई फायदा नहीं होता, and at least it maintains some degree of people to people contact, even when other things are troublesome. And we see even now कि जहाँ जनरल बाजवा ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि इंडिया के साथ तिजारत हो, मिफ्ता इस्माइल ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान की कुछ चीजें हमें जरूरत है, सस्ती मिल जाएंगे, इंडिया से तिजारत होनी चाहिए, लेकिन ये जो सियासत है वो आड़े आ जाती है. So I think that is not at the same level as the kite ban, but I think that's my sort of counter. आपने एक और आतिफ मियां की बात की थी. I think पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाजुक मोड़ सलमान तासी का कत्ल था, और उसके बाद भट्टी जो रिलीजियस मिनिस्टर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, दोनों के साथ साथ इनको कत्ल किया गया था. That also was, I still remember I was actually doing radio bulletins, and it was a very cold sort of winter day. और जब वो खबर आई थी, हमारा दफ्तर जो था, मैं बीबीसी में काम करती थी, मैं रेडियो पे काम करती थी, so I wasn't a reporter, but जब वो खबर आई थी, और I had just visited Kausar, which is where he was killed, I think before I started my bulletin, and it was unbelievable at that time, and it set back the whole idea of के blasphemy law के reforms होने चाहिए. सब डर गए थे, People's Party के अंदर डर गए थे, anybody liberal progressive, it cast a pall on over at least वो जो push थी बहुत अच्छे. There were some brave people and activists who are still pursuing this, but I think it also, I don't want to go into detail, but this also eventually led to the creation of the TLP, जिन्होंने आतिफ मियां के खिलाफ एहतजाज भी किया था उनकी तैनाती के खिलाफ. So मैं दो नाजुक मोड़ कर रही हूँ because I think we're running out of time a little bit. Yeah, I'll quickly comment before you go to winners and losers on that second one number, because इस हफ्ते हमने सुना डस्का में जो है थ्रेट थी, सर जफरुल्लाह खान ने जो अहमदी इबादतगाह जो थी बनाई थी, उसके ऊपर थ्रेट थी अटैक्स की. थैंकफुली दैट वाज अवर्टेड, लेकिन डस्का में जो कब्रिस्तान है अहमदी कम्युनिटी का, उसमें कब्रों के टूम स्टोन्स को तोड़ा गया, उसकी मैं वीडियो भी देख रहा था. शेमफुल, really condemnable acts. Or what you said about the culture of fear reminded me of that instance, क्योंकि मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, इन्फ्लुएंशियल दोस्त हैं. मैंने कहा आप इस पे कभी कुछ लिखते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, क्या हो रहा है ये? वैसे तो बड़े जो हैं पाकिस्तान में बड़ी जल्दी कॉन्वर्जेशन हो जाती है, फ्रांस में अगर बुर्का बैन लग जाए और इस तरह की चीज़ों पे तो लोग बड़ा लिखते हैं, तो आप अपने ऊपर भी ज़रा अपनी सोसाइटी के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं उस पर भी लिखें.
तो उन्होंने जो कहा उससे बड़ी मुझे हैरानी, उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ विनिंग आर्ग्यूमेंट एंड इट क्रिएट्स मोर रिस्क्स देन सॉल्व्स एनी प्रॉब्लम्स। एंड आई थिंक दैट्स द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये जो कल्चर ऑफ डिसएग्रीमेंट तो एक होता है, पोलराइजेशन होती है, दैट्स फाइन, हर सोसाइटी में, दुनिया में हर जगह चल रही है, लेकिन उस पोलराइजेशन के नतीजे में जो कल्चर ऑफ फियर है, जिसपे आपको मालूम नहीं आपकी जिंदगी के साथ क्या होगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेन एक पोजीशन लेना चाहते हैं, that's holding Pakistan a lot. So I'm glad you brought that up, because Salman Taseer and Minister Bhatti's assassination was a clear sort of inflection point there. Yeah, it absolutely was. So, आपने जो आपका last था was Doctrine of Necessity, and I think that segues nicely into my winner of the week, who is the new Chief Justice, Qazi Faiz Issa, who has shown that he is not going to waste his short tenure as Chief Justice. Foreign live streaming key, which I thought was a lot of fun to watch. And I wasted a lot of time when I was supposed to be doing a lot of work on watching that live stream, just to get a sense and a read के जो हम खबरों में पढ़ते थे कि remarks आते हैं, तो what is the body language, what is the कुछ expression? lawyers तो मुझे लगा कि ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन करने आए It हुए was थे। नहीं, और अब वो तो खैर, and you know we can talk, yes absolutely, वो तो एंड में ये भी कहा गया था ना ख्वाजा तारिक रहीम की तरफ से कि मैं तैयारी करके आऊंगा, तो मतलब जिस दिन लाइव स्ट्रीम हो रही थी और तैयारी होनी चाहिए थी, सोचे नहीं आप हुई। सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तैयारी करके नहीं आया, मतलब इफ दैट्स नॉट अ फायरेबल ऑफेंस, आई डोंट नो व्हाट इज। I don't know what it is, but expose people, right? So, but he also has taken a lot of other steps that I think should be interesting, which is he's already a practice and procedures bill जो उसके हवाले से, ताकि एक चीफ जस्टिस के पास सिर्फ वो इख्तियार ना हो कि वो बेंचेस फिक्स करें और सो मोटर केसेस हो, इन प्रैक्टिस वो शुरू कर दिया है, even though we still have to hear a decision on that particular law. And जो फैजाबाद, and again this is related to आतिफ मियां, टीएलपी, उन्होंने फैजाबाद धरना केस जो है वो उसका रिव्यू पिटिशन को भी फिक्स कर दिया है. So fiery moves, big bold moves. I think he is one of the big मैं कहूंगी कि the X factor in terms of elections होंगे या नहीं होंगे. जो सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख के ऐलान करने के बावजूद अभी तक लगता नहीं है कि होंगे या सेटल नहीं हुआ. He is one of the reasons. He's the sort of X factor at this moment. So No winner. losers this week. No, I don't have losers. Okay, तो I will go. I think इस पे क्या कहते हैं, this will be interesting, the X Factor to watch. So I'm excited about what Justice Issa, opening aggressive हुई है फखर जमान स्टाइल, अब देखते हैं स्पिन बॉलिंग सामने से आएगी तो वो क्या करेंगे. My winner, Amber, this week is cultural. There's a new season out of the morning show, Apple TV ka. I don't know if you've seen it. If you haven't, you should watch that series. Jennifer Aniston's the lead role in that. But it's about the media. It's about a morning show on television, but it touches on very sensitive issues. But this season is particular, in my view, is the winner because it gets into the streaming wars. It gets into a tech tycoon who's going into space, trying to buy a media organization. It gets into I wonder who that is. Yeah, and then there is a third angle in this season, which is about hiring for diversity just for the sake of diversity. And some emails get leaked in the season. I won't give any spoilers. But, you know, it's a really, really good season in the sense that it gets to, and very well written, fantastically acted. Jennifer Aniston is amazing. The entire cast is amazing. So that's a winner in my book in that sense. I think the loser for me this week, Amber, is the caretaker prime minister of Pakistan for his trip to New York. Shouldn't have done that. Should have just stayed at home, let his foreign minister do the job of caretaking at the UN. But that's the world we live in. Stratcom's first approach, and we've talked about that already. So that's it from my end. All right, so that brings us to the end of Nazuk Mors. मैं वैसे I'm losing track, Uzair. I hope you're the numbers guy. I hope you're keeping track. I am not. I have to go back to the episodes and count. If someone from the audience is keeping a list, please post it in the comments to make life easy for us. And we'll obviously have more next week, and it's not going to be a slow week. We should also, I think, very importantly, talk about Canada and India, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया, भारत ने तो कह दिया ना कि अब पाकिस्तान को भूल जाए, नया पाकिस्तान कनाडा बन गया.
तो जी उस पे we will try to I think break down the timeline and the key events, why this is a big issue, what's the history behind it, and I will try to find hopefully an expert from India and Canada. Hopefully we can run that interview next week as well to get that expert opinion on that. But that's coming up next week. So in the meantime, share, subscribe, and leave your comments for the Nazuk Mors, और list जिसके पास भी है वो please share कर दे ताकि मुझे रिव्यू ना करना पड़े. But we will see you next week. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.